Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Domestic stock indices climb more than 1.5% amid positive global cues. Sensex closes above the 56,800 points. Nifty settles above 16,900 level. Rupee appreciates 15 paisa against the US dollar, and Brent crude prices rise around 2% to $108 per barrel. सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 56,800 से ऊपर पहुंचा। निफ्टी 16,900 के स्तर को कर गया पार। $1 की तुलना में रुपया हुआ 15 पैसे मजबूत, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग 2% बढ़ी, $108 प्रति बैरल के नजदीक पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला आज भी जारी रहा और प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से सकारात्मक संकेत मिला, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ गया। सेंसेक्स 56,800 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 16,900 के आंकड़े को पार कर गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,041 अंक यानी 1.87% की बढ़त लेकर 56,858 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 288 अंक यानी 1.73% वृद्धि के साथ 16,930 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर देखा गया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.94% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.65% लाभ के साथ बंद हुआ। The Sensex and the Nifty today climbed more than 1.5%. Both stock indices locked gains amid positive global share markets. The Sensex closed above 56,800 points, while the Nifty settled above the 16,900 level. The Sensex rose 1,041 points, or 1.87%, to finish at 56,858. The Nifty surged 288 points, or 1.73%, to end at 16,930. In the broader market at the BSE, the mid-cap climbed 0.94%, while the small-cap index ended 0.65% up. In the Sensex pack, 25 companies posted gains while 5 logged losses. Bajaj Finance was the top gainer as it climbed 10.7%, followed by Bajaj Finserv, which surged 10.1%. Tata Steel rose 4.6%, and Kotak Bank ended 4.3% up. On the other hand, Bharti Airtel tumbled 1.2%, while Ultratech Cement fell 1%. In sectoral indices at BSE, all sectors gained except the telecom sector, which lost 0.4%. IT index was the top gainer as it surged 2.5%. Finance and tech, both sectors climbed 2.2% each. Realty sector rose 2%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,830 companies gained while 1,510 fell. Shares of 139 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 15 पैसे मजबूत हुआ, $79.76 के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक
अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.43% की बढ़त लेकर 106.91 पर चल रहा था। Dr. Sharma, today we've seen a very nice, more than 1,000 points hike in the Sensex. What do you attribute? What are the main factors that contributed to it? Factors are majorly from the global side, like US Fed rates that have been increased by 0.75 basis points. So that is a good move. I think earlier expectations were that the US Fed will increase by 100 basis points. So many expectations like the forecasters and organizations were expecting that this will be an increase of the 100 basis point. But they have increased by 75 basis point, considering so many factors that growth should not be impacted that much, and there must be a balance between the controlling inflation and reviving the growth trajectory. So that's why now markets are in a very good mood that to move forward and with the great deal, because a lot of things are happening at the domestic level also with the reforms, plethora of reforms during the last many years, and recently on the focused areas like MSMEs and export growth. So all these things are helping the markets to move forward with the good strength, because earlier impact was only because of the inflationary expectations that these will go high and the Fed will increase rates again and again. But now the stability is observed in the global market scenario, because they have increased in a rational way. So I think this is the main reason. That's why markets have recovered from the lows, and that is also short covering, because earlier expectations were that markets can go down further. But now markets are stabilizing and people are covering their positions which were shorted earlier. So that is the major reason. डॉक्टर शर्मा, पिछले 10-12 दिनों का यदि हम प्रदर्शन देखें तो घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी और खास तौर से जो FIIs हैं उनकी दिलचस्पी देखी गई है। आमतौर पर जुलाई से पहले वो बिकवाल बने रहे थे, जबकि जुलाई महीने में उनका निवेश भारतीय बाजार में आ रहा है। तो कौन से वो कारक आपको लग रहे हैं जिनमें FIIs हैं उनकी दिलचस्पी हमारे यहाँ बनी है, और क्या ये तात्कालिक है या दीर्घकालीन बनती नजर आ रही है आपको? देखिए, ये है तो दीर्घकालिक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो FIIs हैं, ये ठीक है कि FIIs कभी भी आउटफ्लो करते हैं, लेकिन अभी जो वैल्यूएशंस हैं, जिस तरीके से मार्केट ने काफी डिसलिरेशन देखी है, मार्केट से एक बड़े स्तर से नीचे गिरी हुई है, मतलब जो निफ्टी है वो लगभग कोई 18,000 के स्तर तक पहुंच चुका है। तो अभी हम वापस मुड़ के अभी 17,000 के आसपास ही पहुंचे हैं। तो कारण यही है कि एक अच्छी वैल्यूएशंस मिल रही है मार्केट में, जिसमें कि रिटेलर भी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। ये जो शॉर्ट टर्म टेम्परेरी जो डाउन टर्न्स आती हैं, इसके कुछ और फैक्टर्स हैं, खासकर जो ग्लोबल फैक्टर हैं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, इन्फ्लेशन है और यूएस का रेट इंक्रीज करना। तो जब ये सब चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी तो हमारी जो मार्केट्स हैं वापस वो अगेन न्यू हाइज बना सकती हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल है। वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी, हमारा ग्रोथ सबसे ज्यादा है, हम लीडिंग इकोनॉमीज में सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है, और रिटेलर और खासकर जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो मार्केट के ऊपर काफी आकर्षित है। Dr. Sharma, some of the analysts are also saying that the last 2 days, the rise in the markets, the boost in the markets, positive mood of the market that we've seen is also because of the first quarter earnings that have corporate earning revenues that have come out. Although the profits have been skewed, but mostly, there are positives in the corporate revenues, and also because of higher government spending. Do you think those factors have also, impacted the market? And yes, these are also associated factors, because majorly markets are run by the macroeconomic fundamentals and the global economic developments. But at the micro level, when the corporate results are also supporting the growth trajectory, supporting the Indian economy, and there is a lot of focus of the government on the infrastructure development, and there are new and new reforms each day. So these reforms are also helping the markets to move forward with a strong strength. So that is also associated factors. But majorly,
the markets were impacted recently by the major global factors like geopolitical developments and the inflation and high commodity prices. But if all these things are stabilizing, then the markets have great potential to move forward with a great jump or great scaling up to the new highs. आपने एक महत्वपूर्ण पहलू को छेड़ दिया है डॉक्टर शर्मा। अभी अभी आपने कहा कि सरकार के सुधारों के प्रयासों से नए कह लें कि एवेन्यूज बन रहे हैं। हम खासतौर से समझना चाहेंगे कि निर्यात के क्षेत्र में कहां आपको दिख रहा कि हमारे लिए अवसर बन रहा विदेशों में, और किन क्षेत्रों में, किस सेक्टर में लग रहा है कि वहां निर्यात के स्कोप अधिक हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हमारे पास निर्यात के बहुत अच्छे स्कोप हैं और हम न्यू एरियाज को भी फाइंड आउट कर रहे हैं। हमारे पास नई संभावनाएं हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे टॉय एक्सपोर्ट्स बहुत बड़े हैं। हमारे टॉय एक्सपोर्ट्स जो है वो दुनिया के सभी किसी भी वर्ल्ड जो ग्रोथ है टॉयज में, उससे भी ज्यादा हमारी ग्रोथ रही है। तो उसमें एक अच्छी ट्रैजेक्टरी हमें नजर आ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है और हम इस चीज को और डेवलप कर सकते हैं। खासकर जो एमएसएमईज हैं, जो टॉय कंपनीज में छोटे मझोले जो कारोबारी हैं, उनके लिए और रिफॉर्म्स करके हम उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, सो दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड एक्सपोर्ट मोर, ज्यादा से ज्यादा वो निर्यात करें। तो एक अच्छा एरिया है जो कि डिमांड भी है, ग्लोबल डिमांड भी काफी अच्छे तौर पे आगे उभर रही है। और दूसरे तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक हमारी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है फूड प्रोसेसिंग, फूड एक्सपोर्ट्स। जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हमने $50 अरब के एग्री एंड फूड एक्सपोर्ट्स किए प्रोडक्ट्स। तो एक बहुत बड़ा जंप था ये। उससे पहले के साल में 41-42 अरब डॉलर के आसपास था। तो अभी हमारा लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में हम $100 बिलियन तक का हम एग्री एंड फूड एक्सपोर्ट को आगे लेके जाएं। सरकार की जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है, उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। तो आने वाले टाइम में हम इस सेक्टर में, और यहां से अगर 3-4 साल में हम डबल करते हैं, $50 अरब को हम $100 अरब करते हैं, तो उससे बहुत अच्छे रोजगार के भी संसाधन पैदा होंगे और अच्छा हम निर्यात भी कर पाएंगे। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम $1 ट्रिलियन का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स बनना चाहते हैं 2030 तक, वो भी हमारा लक्ष्य पूरा होगा। तो एक बहुत अच्छा एरिया है। और आईटी हमारी एक ऑलवेज एवरग्रीन स्ट्रेंथ है, जिसके ऊपर हम सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो हमारा हमेशा, वी आर इन द नेट सर्विस एक्सपोर्टर्स। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है। और दूसरा जो फार्मास्यूटिकल अभी 2-3 साल से, जब से कोविड में इसने और स्ट्रेंथ पकड़ी है। अभी पीछे के 2-3 साल में तो काफी अच्छी ग्रोथ आई है। तो एक बड़ा अच्छा और इनहेरेंट एंड स्ट्रांग एरिया है फॉर द एक्सपोर्ट ग्रोथ। और टेक्सटाइल हमारा शुरू से ही एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है इंडिया की, जिसमें भले ही हम उतना जो कुछ अभी रिसेंटली जैसे बांग्लादेश ने और कुछ एशियन इकोनॉमीज ने किया है, चाहे हम उस लेवल पे अभी नहीं कर पाए, लेकिन हमारे अंदर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है कि हम आने वाले टाइम में टेक्सटाइल में एक और अच्छी माहिरियत हासिल करेंगे। तो कुल मिला के जो हमारे पास एरियाज हैं, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एरियाज हैं, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग एरियाज हैं और हमारी उनमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। जैसे कि एग्रीकल्चर का बताया मैंने आपको, एग्रीकल्चर, वी आर एन अग्रेरियन इकोनॉमी। तो हमारे पास हमें कुछ रॉ मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन एक्सपोर्ट। हमारे पास बस उसको एक प्रोसेसिंग का एक संसाधन जो है, क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेसिंग, दो चीजों पर, ये दो चीजों के ऊपर अगर हम आगे और माहिरियत कर लेते हैं, देन वी आर द strong economy to move forward with more and more exports. And now let us take a look at the rupee. In the forex market, the rupee today appreciated 15 paisa against the US dollar. The domestic currency closed at 79 rupees and 76 paisa against the American unit. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.43% to trade at 106.91 in intraday trade. Dr. Sharma, Rupee, we see again now, it's appreciating, and at point, after going down below 80, now it's strengthening again. What are the factors for it, do you think? Earlier factors why the rupee was decelerating because of the major global factors like increase in the crude oil prices and Russia-Ukraine war, supply chain constraints and Fed rate increase. So now all these things are stabilizing, like Fed has increased 75 basis point. Earlier expectation was 100 basis point. So rupee is now getting strength because number one, because US policy is stabilizing, and number two, we are again getting the capital flows. So the dollar is increasing towards India. So that's why now rupee is strengthening, and I think rupee will stabilize and more strengthen in the coming times, and there will be a strong stability.
in the coming weeks. यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां हांगकांग को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजारों में तेजी देखने को मिली। अमेरिका में कल हुई जोरदार लिवाली का आज एशियाई बाजारों पर अनुकूल असर दिखा है। हालांकि बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंग सेंग 0.2% लुढ़क गया। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% ऊपर पहुंच गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% लाभ में रहा। जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.4% की तेजी आई। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो कोई खास उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था। समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100, जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का CAC 40 लगभग अपने पूर्व स्तर के थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहे थे। Moving on to the U.S. market, the Nasdaq jumped more than 4% yesterday in its biggest daily percentage gain since April 2020 as the Federal Reserve raised interest rates as expected, and comments by Fed Chairman Jerome Powell eased some investor worries about the pace of rate hikes. The Dow Jones Industrial Average Index gained 1.4%, the S&P 500 rose 2.6%, and the Nasdaq Composite surged 4.1%. Dr. Sharma, of course, like we said in the very first item, that the Indian markets, of course, were also reacting to this so-called positive news coming out from the U.S. Fed Reserve. And Jerome Powell has also indicated, although he's indicated that at some point the rate hike is going to, it's not going to be so aggressive, although he's not ruled it out completely. But do you think, given the fact that today, just a little while ago, the GDP growth rate for the second quarter of the U.S. economy have come out, and for the second straight quarter, U.S. economy has shrunk 0.9% this time. Do you think it will be easy, and how challenging will it be for Jerome Powell to not, go in for another aggressive rate hike? Yes, very good question, because now we have to create an equilibrium, and there must be a great equilibrium between the inflation and growth. We have, because this is a trade-off. If we are controlling the inflation, then we have to sacrifice the growth. So that is happening everywhere in the world, and US will also face the same situation. So moving forward, I think US started increasing the rates by 25 basis point from the month of March, then 50 basis point in the month of May, then 75 in June, then again 75 in the month of July. I think the recent two moves were very aggressive, but going forward, considering the growth trajectory of the US economy, which is the largest economy in the world economic system, they must be more rationalized in the coming moves. I don't think that they will be so aggressive, because if they want to create employment opportunity, there must be control over the prices. That is true, but they can't control by increasing the Fed rates again and again. So I think these rate hikes will definitely impact the international commodity prices and international cartels on the commodity prices, and dampening the sentiments with the increased cost of doing business. So now the things are moving in the direction, and I think the next rate hike will depend on the inflationary scenario and the international commodity prices. If the international commodity prices are subsiding and decelerating because of the deceleration in the growth projections, then Fed will not move forward with an aggressive move. They can
pause or they can increase with the 25 basis point or 50 basis point maximum. Jerome Powell has said that such an aggressive move anyways, aggressive rate hike will depend on the data coming between now and the next meeting. Yes. So it will all depend on that. So data will be very, very crucial for the next Fed's move. And taking off from this, now that Jerome Powell has indicated that maybe at some point they will slow down and the rate hike will not be so aggressive. Coming to RBI, do you think that this is the rate hike that was announced by US Fed yesterday? What kind of an impact is it likely to have on the RBI's repo rate, which is, they have a meeting coming up next month, August, RBI. So what kind of impact is it likely to have, if any? Yes, I think RBI will also be very, very rationalized in this matter because now the inflation, I think inflation has peaked in India. Now inflation is softening in the CPI and WPI scenario. So if the inflation is coming down and we have already increased the repo rate by 90 basis points, so the real rate of interest will become strong in the coming times with the deceleration in inflation. So I think that will balance the move between Fed rate increase and the increase by our bank. I think there may be some increase in the policy rates by 25 basis points, but I don't see any aggressive move by RBI going forward because already inflation has started softening. लौटते हैं स्वदेश और शुरू करते हैं घरेलू क्षेत्रों से खबरों का सिलसिला। चलते हैं कृषि क्षेत्र में। सरकार ने गेहूं साइलस यानी भंडारण संरचना के विकास के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत देश भर में 249 स्थानों पर 111 लाख टन से अधिक की क्षमता वाले साइलस विकसित करने का प्रस्ताव किया है। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अनाज के भंडारण को आधुनिक बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी में एक नया मॉडल लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। ये साइलो भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत संचालित होंगे। मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण के साइलो के निर्माण के लिए 80 स्थानों पर निविदाएं मंगाई गई हैं। यहां हम आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। एक कह लें कि विशाल भंडार गृह और वो फैले हुए पूरे देश में किस प्रकार से यह कह लें कि विकसित होगा और क्या इसका लाभ मिल सकेगा देश को संपूर्ण तौर पर, सरकारी क्षेत्र को भी और निजी क्षेत्र को भी। देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करते हैं, जब हम अपने भंडारण, अपना जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो उससे हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिनेरियो है, जो हमारी क्षमता है जिससे हम अपने वेस्टेजेस को रोक सकते हैं, तो उसमें काफी सुधार होता है। तो उसी के मद्देनजर मैं ये समझता हूं कि काफी लाभ होगा और आने वाले टाइम में जब हम अपने जो वेस्टेजेस हैं उनको रोकथाम लगा लेते हैं और हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छे से मजबूत करते हैं, तो उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी अट्रैक्ट होता है और उससे हमें विदेशी मुद्रा भी मिलती है, इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं और रोजगार भी पैदा होता है। तो कुल मिला के ये विन विन सिचुएशन है सभी वर्गों के लिए। And you just said that, these moves do attract foreign investors. And on that note, we have a good news coming in. The Union government has said that India is rapidly emerging as a preferred country for foreign investments in the manufacturing sector. The Commerce and Industry Ministry said FDI equity inflow in manufacturing sectors has increased by 76% in last financial year compared to 2020-21. Karnataka with over 37% and Maharashtra with over 26% are the top two states in receiving highest FDI equity inflow. A brief comment, it's like yes, just that is the result of the reforms undertaken by the government in the ease of doing business, where we have a great jump from 142 to 63 during the last 7-8 years. But now the states are also coming forward and they have increased the ease of doing business trajectory with their BRAP reforms, which are implemented by most of the states, and states are now compared on the basis of these reforms on the ease of doing business parameters. So I think with the more and more ease of doing business at the ground level, particularly for the MSMEs and at the state level, we are able to attract more and more investments in the manufacturing sector, because manufacturing sector is now becoming more and more attractive for the foreign investors, because we have a lot of reforms and our rates, corporate tax is, I think, lowest in the world. That is 15% for the newcomers and 17% effective rate for the old firms which are already existing. So this is the lucrative rate.
if somebody comes to India, this is a very great help that they don't have to pay the high taxes. So that's why the FDI is now coming towards the manufacturing sector, and manufacturing sector is becoming more and more lucrative. And the second thing is the change in the definition of MSMEs. Now, earlier there were narrow definitions of the MSMEs. Now the definition is that if the firm's turnover is less than 250 crores, the firm is under the MSME sector. So that is, and there are a lot of benefits for the MSMEs. So all these developments collaboratively are working, and these are able to attract more and more investments and the attraction of more and more investors towards India. And I think after the, because our last 3 years were very, very problematic because of the corona, and government just started the reforms in 14-15, and the results were awaited in these difficult years. But unfortunately, we were not able to attract more investments during those days or those difficult days. Though FDI increased significantly, but now when the economies are becoming normal and all world economy is also in a recovering mode, then we have a great potential to attract more investments in the coming times. And it shortly, I believe, in the next year, India will become a $100 billion investment destination in the foreign direct investments. श्रोताओं को हम जानकारी देना चाहेंगे कि सिंगापुर और अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 में देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों में रहे हैं, जबकि मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड का स्थान इसके बाद रहा है. And now let's move on to commodities. Oil prices today rose around 2% in intraday trade. Crude prices climbed amid improved risk appetite among investors as lower crude inventories and a rebound in gasoline demand in the United States supported prices. Brent crude was trading at $108.70 per barrel, while WTI crude prices were at $99.50 per barrel. यहां पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. लगभग 2% का उछाल एक दिन के कारोबार में, क्या ये चिंता का विषय फिर तेल के दाम बढ़ना लग रहा है आपको? देखिए, ये चिंता का विषय अभी नहीं है, क्योंकि ये इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि जो फेड की एक्सपेक्टेशंस थी जो पहले 100 बेसिस पॉइंट पे, तो अभी 70 बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज हुआ है. तो क्रूड को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि जब रेट इंक्रीज होते हैं तो उसका सीधा असर जो है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर आता है. तो स्पेकुलेटर्स जो पहले क्रूड में अपनी पोजीशंस बांध के रखे हुए थे, जब ये चर्चा हुई थी कि फेड 100 बेसिस पॉइंट पे इंक्रीज करेगा, तो उस समय पे कुछ नरमी आई थी. तो वापस अभी 75 हुआ है, तो थोड़ा सा उनका ये बना है कि अपनी पोजीशंस को थोड़ी देर के लिए वो होल्ड करके डिमांड सिनेरियो को देख के डिमांड कैसे प्रिवेल करेगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस हिसाब से वो अपनी पोजीशंस को आगे देख पाएंगे. तो आई डोंट सी दैट ये सस्टेनेबल रहेगा. क्रूड प्राइसेस जो है वो ज्यादा देर हाई लेवल पे सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो डिमांड है वो उतनी ज्यादा बढ़ने के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही. आइए चलें सर्राफा बाजार. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में 350 रुपए बढ़कर 51,070 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 1,950 रुपए की उछाल के साथ 56,435 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोना मजबूत होकर $1,756.90 प्रति आउंस पर चल रहा था, जबकि चांदी $19.40 प्रति आउंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी. डॉक्टर शर्मा, यहां पर हम सोने चांदी पर आपकी दृष्टि को समझना चाहेंगे. चांदी में आज लगभग कह लें कि 2,000 रुपए प्रति किलो की तेजी देखने को मिली है. किस दिशा में जाती दिख रही चांदी? देखिए, जैसे मैंने पहले इक्विटी मार्केट के बारे में बताया, तो काफी शॉर्ट सेलिंग हुई है, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि 100 बेसिस बहुत ही अग्रेसिव मूव रहेगा. तो काफी सोने में, चांदी में तो बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, और क्रूड के प्राइसेस भी नरम हुए थे. तो अब जैसे फेड उस तरीके से नहीं चला है, बहुत अग्रेसिव मूव नहीं रही है, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली है कि वो अपनी शॉर्ट कवरिंग को वापस शॉर्ट कवरिंग करें. वो जो सेल किया हुआ है, जो शॉर्ट्स पोजीशन है, उनको कवर करें. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना. जी शुक्रिया, थैंक यू. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks indices climbed more than 1.5% amid positive global cues.
Sensex closes above 56,800 points. Nifty settles above the 16,900 level. Rupee appreciates 15 paisa against the US dollar. And Brent crude prices rise around 2% to $108 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters and later on in the day at 6:30 p.m. with Market Mantra. Till then, this is the whole team of Market Mantra saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.